वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधाम् बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने ओम्। ब्रह्माहं यत्प्रसादेन मयि विश्वं प्रकल्पितम् श्रीमत्स्वयं प्रकाशाख्यं प्रणौमि जगतां गुरुम्। यः परमात्मा जगत्सृष्ट्वा प्रविवेश पुनः स्वयं तं कृष्णं प्रत्यगात्मानं वन्दे गोपीमनोहरम्। यस्य प्रसादादहमद्वयात्मा विश्वं समस्तं मयि कल्पितं च तं सर्वलोकैकगुरुं सदाश्री स्वयं प्रकाशं गुरुमानतोऽस्मि। गुरुणां चरणां भोजं प्रणिपत्य निरन्तरं तत्कृपालेशतोऽद्वैत चिन्ताकौस्तुभमारभे। ओम्। Badha, which really means apavad, superimposition, also is called as vilapanam, dissolution. Now look at these three words: desuperimposition, falsification, and dissolution. All the three are used synonymously. They have the same meaning. So the author further goes to say the falsification or vilapanam is threefold: shastriya badhaha, yauktika badhaha, and pratyaksha badhaha. And we were dwelling upon the yauktika badha yesterday, where in the original text, Mula Grantha, it says, I will like to go through this part with you people, not mention it and slip over it, though this is a recapitulation, but as an exercise to do it, go through the details of it along with the commentary. Yauktika badha means the word badha allows us to understand falsification. It is falsification. Falsification through what? Through yukti. Yukti here means through a process of logic. When something is shown logically presented, which means all the links are established, and therefore that what has to be understood doesn't simply remain
something to be swallowed, something to be believed, something to be just taken for granted or assumed. And therefore, it is a matter of understanding. Yauktika, so it is falsification through a proper line of logic. And that has to be understood. Yauktika bhadasya ayam kramaha. This is the krama. So there is a sequence to the yauktika bhadha. Because one leads to the other, the other leads to the still next, so on and so forth. What is it? Sthula prapancham sarvamapi sthula bhuteshu vilapya. Now look at this. He uses this word vilapanam over here. So sthula prapancham, the gross world, is dissolved in the gross 5 elements. Sthula bhuteshu vilapya. This dissolution is not something simply to be understood like sugar getting dissolved in water. But it is rather something like the pot going back to the clay. When we say the pot goes back to the clay, does that mean that the pot has to undergo some kriya, has to undergo some sort of a transformation to become clay? Does it have this idea that the pot, only after breaking the pot, reducing it to powder, will become clay? So when pot, it is said, pot goes back to the clay, what does this sentence allow you to understand? So it means that the pot was clay, is clay, and will be clay. There is nothing other than clay which can be called as pot. There is nothing other than clay that can be called as pot. So then where does this leave the pot to be? So now it allows you to understand that pot, with all its name, the name, the form, attributes, and functions, is an appearance in the clay. This is the dissolution of the pot. Okay? Do not have that idea that everything has to get destroyed and only then it will be back into its karanam. To understand that this karyam is nothing but karanam alone. There is nothing other than karanam which can be called as karyam. This understanding, without any doubt, then will be called as vilapanam, and that's why that is also called as falsification. It is called as desuperimposition.
So sthula prapancham sarvamapi sthula bhuteshu vilapya. He makes it clear. Tadvyatirekena tannasti iti nishchitya. What does it mean? Vilapya means having dissolved. Vilapya means having dissolved. So what is that dissolution? Tadvyatirekena tannasti. It does not have existence apart from that. It means karyam, and that means karyam, karanam. So karyam, the effect, does not have any existence apart from tadvyatirekena. Tadvyatirekena, karana vyatirekena, karyam nasti. Sthula panchamahabhuta vyatirekena sthula prapancho nasti. Nothing else, but this is just the grossified 5 elements. Iti nishchitya. Okay. Now, having come to a firm understanding. Okay, nishchitya, because this is nishchaya. So it is knowledge. And that knowledge is how nishchayatmika means with certainty. उसमें कोई संशय संदेह के लिए स्थान नहीं है. तन्नास्ति इति निश्चित्य. So having come up to this point, then the process of dissolution, desuperimposition still further continues. But up to this point, it is sthula prapancham sthula bhuteshu vilapya. Iti tadvyatirekena vilapya means tadvyatirekena tannasti iti nishchitya. Okay, let us look at it in the commentary part. Hopefully everybody has got this page with them. Are you on this is page number 115. Have you found it? Yes, Yes, Swamiji. yes, Swamiji. 4th line. 4th line? Huh. Yeah. Second part. ठीक है. Sarvam. Sarvam means what? Sarvam sthula prapancham. That sarvam pada, the word sarvam pada, allows you to understand, cognize what all things can be accommodated in this particular word sarvam in our present context. Sarvam will mean sthula shariram arabhya brahmanda paryantam. Okay. Sthula shariram arabhya brahmanda paryantam. Everything up to the cosmic egg. What is this cosmic egg you're talking? What all things will come under it? Beginning from this sthula deha, one's own gross body. Sthula shariram arabhya. That would include everything. Your wife, your father, mother, children, husband, their ancestors, everything. स्थूल शरीर पूरा खानदान से ले शरीर से लेकर सारे खानदान वंदन सब स्थूल शरीरम आरभ्य देन ब्रह्मांड पर्यंतम up to the cosmic egg. स्थूल भूतेषु means panchikrita bhuteshu. In the panchikrita bhutas. What are these panchikrita bhutas? The tamasamsha of the Panchamahabhutas, the tamas amsha of
every individual Panchamahabhuta getting mixed up with the tamasa amsha, combining with the tamasa amsha of other four Mahabhutas. Okay? This is called as Panchikaranam. Now, the bodies with which we live and whatever is called as our world is only Parthiva. Parthiva. Deha means, if you remember how the Panchikaranam was explained, how does that happen? That every Panchamahabhuta, the tamasamsha of every Panchamahabhuta gets divided in two. Remember? So the first half remains intact. Then what happens to the other half? It further divides into four. So that means that every four is actually the 1/8 of the of that Mahabhuta. Okay? Is that Yes, okay? Ji Swami. Now the 1/8 part of Akasha goes and mixes with the half part of the Vayu. Then the next 1/8 part of Akasha goes and mixes with the half part of the Teja. With this, what happens? That every Panchamahabhuta, the Tamasamsha, thus gets mixed with the half of the other four. Now, when it comes to Prithvi, let us think about the Prithvi Tattva. In this Prithvi Tattva that we have, the Sthula Prithvi, what is the predominant Tamasamsha of which Bhuta? Prithvi. Prithvi. And therefore, though there is space, though there is Akasha, Vayu, Teja and Apa, the predominance will be that of Prithvi. Now, the world which we have with the innumerable galaxies and things like that is only the expression of Parthiva Amsha being the predominant Panchikrita Bhuta. Got it? yes, Swami. Now this Brahmanda has got all, including the Akasha, where the Akasha remains the predominant element and others mixing in it. Where there is Teja, which remains the predominant Amsha and other Amshas mixing in it. Okay? Thus, what we have over here now is what we are seeing and what we call as our gross world is nothing but just the 1/5 of the total gross world of the Brahmanda. That itself is so vast that it has amazed the human mind for centuries together, and this itself remains as a big mystery. What is beyond these galaxies? You understand? We are talking about Sthula Shariram Arabhya Brahmanda Paryantam. Everything that now is going to be accommodated in the word Sarvam. Now this Sarvam, everything, whatever you have, you can understand about Sarvam. Brahmanda Paryantam Sthula Bhuteshu. Now this Sthula Bhutas, how many? 5 of them. Okay?
and each bhuta with its own predominance, with the amshas, with the parts of the other four. Okay, therefore there are going to be 5 Panchamahabhutas, and hence Bhuteshu, it will come as Bhuteshu, plural. Panchamahabhuteshu tesham karanatvat teshu vilapanam uchitam, because this Panchamahabhutas, this all this Sthula Shariram Arabhya Brahmanda Paryantam, why can it be said as to be getting dissolved in the Panchikrita Panchamahabhutas? Because this Panchikrita Panchamahabhutas is the Karanam of this Brahmanda. Okay, Tat Karanatvat means Brahmanda Karanatvat. Brahmanda Karanatvat Teshu Vilapanam Uchitam. Uchitam Yogyam is justified. ठीक है, यहाँ पे ये पंक्ति पूरी लगी है आप लोगों को? हाँ, तेषु विलापनम उचितम इति भावः. किम तद विलापनम? What do you mean by that vilapanam, dissolution? Iti akanshayam aha. So when this is kim tat, so vilapanam is uchitam. Understood, sir. But what exactly do you mean by that vilapanam is what is demanded to know. So iti akanshayam, when there is this desire, akanksha, that akanksha purti happens. Tad vyatirekena tannasti iti nishchayaha. What is that vilapanam? Tad vyatirekena tannasti iti nishchayaha. So having done this nishchaya means nishchitya. But nishchaya is, what is the swarupa, what is the form of this nishchaya? Tad vyatirekena tannasti. ठीक है? Yes, Swamiji, yes. Right. He further explains in the commentary section, Karani bhuta panchikrita bhuta vyatirekena. Now, how are these panchikrita bhutas? They have assumed the form of karanam. They have the status of karanam. The cause, as the cause. So now it has the status of being the cause, and therefore Karani Bhuta. This Karani Bhuta does not mean we are talking about another Bhuta. Karani Bhuta means having the status of being the cause. Karani Bhuta Panchikrita Bhuta Vyatirekena Brahmanda Tadantaha. Tad antaratika antarvarti. Printing mistake. There is a printing mistake. Brahmanda tad antarvarti karya jatam nasti. Brahmanda and whatever is in the Brahmanda. Now just don't think about the Parthiva Jagat. Like that, there is even where the Akasha is predominant, where there is Teja is predominant, where there is Apa is predominant. Kalpana ke bahar hai ye sari cheezein. Parantu tad antarvarti karya jata nasti. जैसे हमारा पार्थिव शरीर है, वैसे कहीं पे देवता इत्यादियों का तेज प्रधान शरीर होता है. मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था ना, कभी ये किया होगा जब. Does anybody remember? No, Swamiji. Saintly. So therefore, this devata, etc., celestial bodies,
they are not exactly of the parthiv like our shariras. Then their sharira is how their sharira is teja pradhana, tejasa shariras. Okay, that's why their bodies do not cast a shadow. Their shariras do not cause any shadow. So there is that Tejasa world. There are these other beings like the Pishachas, etc. In our things, there is nothing like devil and followers of devil, Pishacha, etc. All these Yaksha Kinnara are also different celestial bodies only, but lower forms. Okay? They have Vayavya Sharira. They have the Sharira, which is Vayavya Sharira. So now Brahmanda Tad Antarvarti Karya Jatam, which includes everything, whether it is Parthiva Sharira, Taijasa Sharira, Vayavya Sharira, Jaliya Sharira, everything included. Tad Antarvarti Karya Jatam Nasti. Nasti means is not there. Hey, do you want to say that whatever we are saying is not there? We are, what is said? Panchikruta Panchamahabhuta Vyatirekena Brahmanda Tadantarvarti Karya Jatam Nasti. Kasya Vyatirekena? Without which means without what are you talking about? Without कारणीभूत पंचीकृत भूत व्यतिरेकेण ब्रह्मांड तदंतर्वर्ती कार्य जातम नास्ति इति. This is the nishchaya. Once when this nishchaya has taken place, okay, iti निश्चित्य, पहले तो ये निश्चय कर लो. निश्चय के बाद इति निश्चित्य. So like how you say, having reached over there, then you buy this thing. What does that mean? Don't buy it before reaching over there. Correct? Yes, Swamiji. So having reached, you buy. That means what, क्या क्रम रहेगा? First you reach, then you buy. Like that, पहले क्रम क्या है? निश्चित्य, having come to this firm conclusion. Okay? एवं निश्चित्य, पहले तो ये निश्चय कर लो, मतलब आत्मा ब्रह्म है, इस निश्चय तक पहुंचने से पहले आपको देखो निश्चयों की क्या एक एक क्या कहते हैं सीक्वेंस, क्रम क्या है. सीधा आत्मा ब्रह्म है ये निश्चय होना मंद प्रज्ञाओं के लिए मुश्किल है, कठिन है. इसीलिए क्रम से चलो, एक एक कदम धीरे धीरे उठाओ. पहले ये निश्चय हो जाए कि पंचकृत महाभूतों के सिवा ब्रह्मांड और ब्रह्मांडांतरवर्ती कार्यजात कुछ नहीं है. तो है क्या? केवल पंचीकृत पंचमहाभूत, इतना ही है. ये निश्चय हो जाए. एतदुक्तम भवति. दिस इज व्हाट इज मेंट. दृश्यमानस्य कार्यजातस्य कारण सत्तातिरिक्त सत्ता अनंगीकारात् कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति इति निश्चित्य. देखो एक एक बात कैसे है. तो ये निश्चय आपके यहाँ पे कैसे बनेगा ये भी देखो. मतलब उसका बुद्धि में उसका आकार क्या होगा वो देखना. बहुत मतलब ये, इसीलिए ये समाधि अभ्यास की जो बात उन्होंने पहले भी कही थी वो ये है. देखो अति प्रयत्नतः है ये.
दृश्यमानस्य कार्यजातस्य. So whatever is being seen, known, experienced, or that can be experienced, seen, known, drishyaman. So it is what? Drishyaman. Drishyamanasya karyajatasya. So this drishyaman padartha is what? It is karyam. So entire anything that can come under the category of karyam, karyajatasya. Karana satta atirikta does not have any existence of its own other than the karanam. Karana satta atirikta satta. कारण सत्ता से भिन्न दूसरी कोई उनकी स्वतंत्र सत्ता अनंगीकारात is not acceptable, is not accepted. अनंगीकारात. अच्छा, आप लोग, if you people have ever eaten what this they call in Bombay as bhel, क्या चीज है वो? बताओ क्या है भेल? ना किसको बोलते हैं? Mixture of many items. तो एक एक को निकाल दो तो कोई भेल है क्या? नहीं. तो भेल है क्या भाई? इमली है, गुड़ है, टमाटर, वो सब है, इसको तुमने भेल कहा. तो उस भेल नाम का जो पदार्थ है, ठीक है, वो चीज क्या है कि अपने कारण के सिवा, उसके कारण क्या है? इमली, मुरमुरा, वो सब चीजें, उसके सिवा और कोई चीज है ही नहीं. ठीक है ना? तो कारण सत्ता अतिरिक्त सत्ता अनंगीकारात् कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति इति निश्चित्य. इति निश्चित्य मीन्स ये निश्चय कैसा है? तद विस्मृत्य कारणेक गोचरम स्मरणम विलापनम इति. तद विस्मृत्य मतलब ये इनका भेद, कार्यों का भेद विस्मृत हो जाए कि ये फलाना, ये फलाना, ये ढीका, कुछ नहीं, ये पंच महाभूत ही है. इति कारणेक गोचरम स्मरणम विलापनम. ठीक है? Yes, Swamiji. जब यहां तक आएंगे तो आगे तो इति विलाप्य. तत्रापि पृथ्वीम अप्सु. ये यहां तक हो गया. स्थूल भूतानि स्वकारणीभूत तामसांशेषु स्थूल भूतानि स्वकारणीभूत तामसांशेषु अंतःकरणम. ज्ञानेन्द्रियाणि स्व कारणीभूत सात्विकांशेषु. ठीक है, वहां पे कॉमा मानना चाहिए. स्थूल भूतानि स्वकारणीभूत तामसांशेषु. So where have you now, where does this sthula bhutas also now go back? Swakarani bhuta. What is the karanam of this sthula bhutas? The tamasamsha. Swakarani bhuta tamasamsheshu. Then, antakaranam jnanendriyani स्वकारणीभूत सात्विकांशेषु. ठीक है? अंतःकरणम along with the jnanendriyas. Where will they be dissolved? Sattvikamsha. In the sattvikamsha. Prana karmendriyani स्वकारणीभूत राजसांशेषु विलाप्य इत्यर्थः. अब इस प्रकार करके
देन आगे तत्रापि पृथ्वी समष्टि स्थूल भूतानि समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीरंच सूक्ष्म भूतेषु विलाप्य, ये सूक्ष्म भूतों में उनका विलाप कर दिया। स्व स्व कारणीभूत राजसांशेषु विलाप्य इत्यर्थः। फिर इदानीं सूक्ष्म भूतानां उत्तरोत्तर विलापनम आह। Now furthermore, the vilapanam, dissolution even of those sukshma mahabhutas is being told. Tatrapi idanim paramakaranasya mulajnanasya chinmatre vilapanam aha. Then further, yahi pe aaya hai. तो वायुम आकाशे आकाशम अज्ञाने अज्ञानम चिन्मात्रे विलापये. Then finally, even the ajnanam is dissolved in the consciousness, pure consciousness. Chinmatre. Chinmatra means only the chidvastu. Vilapaye. Okay. Chinmatre vilapaye. Now, there is going to be a little difference between the vilapanam of the mahabhutas right up to the ajnanam. But dissolution of ajnanam into the chidvastu in the consciousness is not with the logic of karya and karanam. Okay? But in that also, the principle is the same. Tadvyatirekena tannasti. Okay? The principle is the same. So also over here, though chidvastu is not the karanam of ajnanam, because if you say ajnanam has a karanam, then ajnanam will become adi, sadi, will be having a beginning, which is against everybody's experience. Ajnanam does not have any beginning. That's why avidya is called as anadina. Anadi. Yes. So it is not by the logic of karya going back into karanam. But even when the karyam is said to be dissolved in the karanam, the principle is, what is the principle? Tadvyatirekena tannasti. Chakresh? जी स्वामी जी। कठिन हो रहा है आप लोगों को किसी को? नहीं स्वामी जी, फॉलो कर रहा हूँ। संगीता ठीक है? हाँ जी स्वामी जी ठीक है। जयामा यहाँ तक ठीक है ना? जी स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक, चलो। अगर कहीं पे लग रहा है कि अभी पकड़ में नहीं आया या समझा नहीं है तो विचार करेंगे, ठीक है? इदानीम, नाउ परम कारणस्य, what is the परम कारणम of all this? अज्ञानम. चिन्मात्रे विलापनम आह. Okay, चिन्मात्रे विलापनम. What will that be? That also be? It is also tadvyatirekena tannasti. There is no existence of ignorance. There is no location for ignorance to be there other than consciousness. Other than that consciousness, therefore, is not, we are not talking about, consciousness which is like some quality of the brain. Na bhai. Jnanam, existence, ajnanam iti. Ukta krame pramanatvena Vishnu Purana Vachanam udaharati iti. ठीक है. Now he gives you the pramanam of Vishnu Purana and Vartikakara.
अध्यारोप अपवाद निरूपणेन फलितम अर्थम दर्शयति. Now, therefore, through adhyaropa and apavada, you were able to reach this conclusion. Where did you reach? Abhyam. Adhyaropa apavadabhyam tattvam padartha shodhanam api siddham bhavati. Thus, what has happened? Abhyam. Through these two. Abhyam. Because of these two. What are those two? Adhyaropa and apavad. Superimposition and desuperimposition. Because of these two, you were able to do the padartha shodhanam. Which padartha shodhanam? The tatpada and tvam pada. Padartha shodhanam api siddham bhavati. You were able to understand with clarity shodhanam, shuddhi, of this, the padarthas tat and tvam. Okay. Siddham bhavati. All right. So now, once again, we are at a point where let's revise that definition of adhyaro, definition in the sense, the way we have to understand adhyaropa and apavada. Remember this. Tatpadarthasya mayopahitasya jagadjanmadi karanatvam brahmanaha tatastha lakshanam. What is the tat? So there is tatpada. Pada means the word. Now in this sentence, the word tat means what? Mayopahita Chaitanya. Brahma. Brahma. It Brahma. means Brahma. Hmm. If the word tat only means मायोपहित ब्रह्म, ऐसे नहीं होगा. शुद्ध ब्रह्म का भी वहां पे अर्थ है. हाँ, यदि केवल आप शबल ब्रह्म कहोगे, मायोपहित ब्रह्म कहोगे, ईश्वर बन जाए. हाँ, तो होगा नहीं. इसलिए वहां पे वो तत्पद जो है, वह शब्द तत् दोनों को ही बता रहा है. मायोपहित ब्रह्म को भी बताता है और माया विरहित ब्रह्म को भी बताता है. माया विनिर्मुक्त ब्रह्म को भी बताता है. ठीक है. यस. परंतु क्या होगा? तत्पदार्थस्य मायोपहितस्य जगज्जन्मादि कारणत्वं ब्रह्मणः तटस्थ लक्षणम. यह जो जगत जन्मादि बताया कि परमात्मा जगत कारण है, ये जो बताया गया, that what is being said like this, that Paramatma is the cause of this world, is the tatastha lakshanam. Okay? Brahmanaha tatastha lakshanam. Ayameva adhyaropaha iti uchyate. This itself is called as adhyaropa. ठीक है. ब्रह्म में प्रपंच के कारणत्व का निर्वचन करना, यही अध्यारोप है. Can somebody repeat this? ब्रह्म में प्रपंच के कारणत्व का अध्यारोप करना. नहीं, अध्यारोप नहीं, मतलब उसका कारण का उसमें निर्वचन करना. निर्वचन. हाँ, निर्वचन मतलब कहना. क्या कहा? ब्रह्म प्रपंच अथवा जगत कारण है, कहा ना. तो ब्रह्म में जब ब्रह्म को अपने जगत कारण कहा, तो कारणत्व किसमें है?
ब्रह्म में, हमें ब्रह्म में, है ना। ब्रह्म में कारणत्व है। किसका कारणत्व है? जगत का, जगत प्रपंच का। कारणत्व। तो ब्रह्म में जगत कारणत्व कहना, यही क्या है? इस बात को क्या कहा हमने? अध्यारोप। तटस्थ अध्यारोप अध्यारोप। कहा। ठीक है। परंतु ब्रह्म जगत कारण है, ये क्या है? ब्रह्म का एक लक्षण है कि नहीं है? हाँ तटस्थ। कैसा लक्षण है ये? तटस्थ तटस्थ लक्षण है। सो इसीलिए तत्पदार्थस्य मायोपहितस्य जगज्जन्मादि कारणत्वं ब्रह्मणः तटस्थ लक्षणम् अयमेव अध्यारोपः इति उच्यते, ये कहा जाता है। फिर कहते हैं कि तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः, जो सच्चिदानंद रूप है अथवा सच्चिदानंद स्वरूप है, यही स्वरूप लक्षण बनता है, ये लक्षार्थ है। इस प्रकार ब्रह्म केवल सच्चिदानंद है, हाँ, और माया विरहित है, ये समझना यही अपवाद है। अयमेव अपवादः। ठीक, अयमेव अपवादः। सो अध्यारोप अपवादाभ्याम क्या क्या हुआ? अध्यारोप अपवाद के द्वारा क्या हुआ? तत्वं पदार्थ शोधनम सिद्धम भवति। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों का ही शोधन होता है। शोधन मतलब एक प्रकार से खोज भी है, शोधन मतलब शुद्धि भी है। स्वामी जी, इज इट नॉट ओनली तत्पदार्थ? त्वम पदार्थ के लिए तो यू नीड अन्वय व्यतिरेक, राइट? अन्वय व्यतिरेक दोनों जगह आएगा। Because we're talking about Brahman, we're not talking about individual jivas. क्यों नहीं? व्यष्टि समष्टि दोनों का विचार किया कि नहीं? Yes. तो व्यष्टि का विचार किया जहां, वहां त्वम पदार्थ का विचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, but प्रत्येक is as a witness, right? I mean, sorry, I'm not able to put the question properly, but I think we are talking about Brahma as a whole. ठीक है। जहां हमने विचार किया व्यष्टि का, तो उस व्यष्टि में भी हमने पंचकोशों का विचार किया कि नहीं किया? किया। अवस्था त्रय का विचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ है ना। तो जो साक्षी चैतन्य है वह ब्रह्म है। ये वाक्यार्थ तो निकल आएगा। तो अभी तो केवल हमने चैतन्य, शुद्ध चैतन्य समझा ना। त्वम पद का भी लक्षार्थ शुद्ध चैतन्य है। यस। तत्पदार्थ का भी लक्षार्थ शुद्ध चैतन्य है। यस। आपके पास कितने शुद्ध चैतन्य हो गए? दो। त्वम। हाँ, तो तत्पद के द्वारा भी शुद्ध चैतन्य प्रस्तुत हुआ, त्वम पद के द्वारा भी शुद्ध चैतन्य प्रस्तुत हुआ। परंतु जो शुद्ध चैतन्य है वह एक है, ये समझा क्या अभी तक तत्व पदार्थों के शोधन से? नहीं। ये किससे होगा? ये वाक्य का वाक्य से ही होगा। जब वहां पे 80 पद आएगा तब वाक्य पूरा होगा। ठीक है।
इसलिए इन ओके। दोनों का ऐक्य जो है वह महावाक्य के द्वारा ही समझा जाता है। परंतु वाक्य समझने के लिए आपके पास वाक्य में उपस्थित जो पद है उसका अर्थ पहले होना चाहिए, तब वाक्य अपने अर्थ को बताएगा। पदों का अर्थ पहले अवगत होना चाहिए, तब वाक्य इन पदों को साथ लेके अपने नए अर्थ को बताएगा। तत्पदार्थ का अर्थ हो गया शुद्ध चैतन्य, त्वम पदार्थ का अर्थ हो गया शुद्ध चैतन्य। किंतु एक है, ये बात नहीं ना समझ में आई, जो तत् है वही त्वम है, जो त्वम है वही तत् है। ये समझा था क्या पहले तत् और त्वम पदार्थों के विचार से? नहीं, ये कब समझा? समझा ही नहीं। वाक्य से पूरे सेंटेंस, वाक्य से समझेगा। पूरे सेंटेंस। इसलिए वाक्य का अर्थ है ऐक्यम, ठीक है। यस स्वामी जी। और त्वम पद का भी यहाँ पे शोधन हो गया। कैसे शोधन हुआ? क्योंकि हमने व्यष्टि का विचार किया, ठीक है। यस स्वामी जी। तो त्वम जो है वो व्यष्टि है ना यहाँ पे, यस। इंडिविजुअल, इसीलिए। ओके, थैंक यू स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, हाँ। तथा ही अब ये कंक्लूजन की ओर चल रहे हैं। तथा ही मायादि समष्टि तद उपहित चैतन्यम एतद आधार अनुपहित चैतन्यम अखंड चैतन्यं च तप्ताय पिंडवत् एतत्रयम् अविविक्तम् एकत्वेन अवभासमानं तत्पदवाच्यार्थो भवति। तथा ही, सो also now what मायादि समष्टि, समष्टि मायादि समष्टि का अर्थ क्या निकलेगा? माया समष्टि सूक्ष्म, समष्टि स्थूल और समष्टि कारण। समष्टि कारण का नाम माया हो गया, ठीक है। यस। समष्टि सूक्ष्म का नाम हिरण्यगर्भ। ना हिरण्यगर्भ चैतन्य को कहा, मतलब इस समष्टि सूक्ष्म से उपहित चैतन्य का नाम हिरण्यगर्भ है। शायद मैंने आप पहले मेंशन नहीं किया, इसी को महत कहते हैं। ओके। क्या कहेंगे? महत। महत, क्योंकि महान है इसलिए महत। और समष्टि स्थूल देह, सो तीनों समष्टियों से को लेके इन समष्टियों से उपहित चैतन्य, समष्टि कारण से उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर, समष्टि सूक्ष्म से उपहित चैतन्य का नाम हिरण्य। और समष्टि स्थूल से उपहित चैतन्य का नाम वैश्वानर। ये तो आपके पास अब कितने चीजें हो गई? तीन हो गई। एक्चुअली इसको अगर डाला जाए तो दो भी बन सकती है, एक समष्टि और समष्टि से उपहित चैतन्य, ठीक है। यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। यस स्वामी। तीनों समष्टियों को एक मान लो, एक में कर दो, समष्टि बोल दो, तीनों समष्टियों को समष्टि बोलो, और तीनों उपहित चैतन्यों को केवल उपहित चैतन्य बोलो। तो अब तुम्हारे आसान हो गया ना, दो ही कैटेगरीज हो गई। समष्टि हाँ, समष्टि और समष्टि उपहित चैतन्य। और तीसरा एतद आधार अनुपहित चैतन्यम अखंड चैतन्यम च, और इन दोनों का ही जो आधार है, समष्टि का और समष्टि उपहित चैतन्य का भी जो आधार है, वह चैतन्य क्या है?
अखंड चैतन्य, वह अनुपहित चैतन्य है, अनकंडीशन. सो कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस विथ कंडीशनिंग एंड द कंडीशनिंग, तीन चीजें हो गई. ठीक है, मिला. Yes, sir. Yes, Swamiji. Yes, Yes, Swamiji. Swamiji. मायादि समष्टि तद उपहित चैतन्यम एतद आधार अनुपहित चैतन्यम. ये अनुपहित चैतन्य जो है वह कैसा है? अखंड चैतन्यम, इसमें कोई खंड नहीं है. अखंड चैतन्यम. ये क्या है? तप्ताय पिंडवत, लाइक द हीटेड आयन बॉल. तप्त आय पिंडवत. आय मतलब आयन. तप्त आय पिंडवत. एतत्रयम अविविक्तम. When all these three are known, but obviously they are known. समष्टि तो दिख रही है, समष्टि उपहित चैतन्य को जानते हैं, और उस समष्टि उपहित चैतन्य बोलोगे तो चैतन्य जो है स्वयं कैसा है? अनुपहित है, अखंड है. हाँ, अविविक्तम, परंतु इनका विवेक नहीं हुआ है, इसीलिए ये एकत्वेन अवभासमानम. They are seen as, it is seen as one, like the iron and the fire. Is iron the fire? No. 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 Is fire the iron? No. No. So fire and iron are two different things, elements. Yes, yes. Yes. बिल्कुल दो अलग जुदा वस्तु हैं. परंतु व्यवहार करते समय what will we say? Oh, I got burnt by the Hot iron. iron ball. है ना? ऐसे ही कहोगे ना. Does iron ball burn you? Or fire burns? No. Fire Fire burn. burns. Fire burns. Iron doesn't burn. Iron may, it may have weight, but it doesn't burn. What burns is fire. So fire in that iron ball has burnt you, but aviviktam, because it is not seen as two different. Aviviktam taptaya pindavat. अविविक्तः. क्या अविविक्त है? इन तीनों का विवेक नहीं हुआ है. किन तीनों का? समष्टि, समष्टि उपहित चैतन्य और समष्टि अनुपहित चैतन्य. इन तीनों का विवेक नहीं हुआ है. अविविक्तम. अविविक्तम मतलब एकत्वेन अवभासमानम तत्पदवाच्यार्थो भवति. यही तत्पद का वाच्यार्थ है. ठीक है, देखना आपके तत्पद वाच्यार्थ का डिस्टिलेशन कहां तक पहुंचा है. ठीक है, ये सब. Yes, sir. हाँ, अब ये जो डेफिनेशन आपके तत्पद वाच्यार्थ की है, ये क्या हो गई? केवल हम तत्पद वाच्यार्थ पहले क्या बोले थे? जगत कारणत्वम. जगत कारणत्वम को और जब डिस्टिल किया तो क्या मिला? जगत कर्तृत्वे सति जगत उपादानत्वम. ठीक है, अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वम. ये मिला ना? Yes. फिर उसका अर्थ क्या निकला? मायोपहित चैतन्यम. चैतन्यम. Yes. ठीक है, अब अर्थ क्या निकला? It is three parts: समष्टि, समष्टि उपहित and समष्टि अनुपहित चैतन्य. एकत्वेन अवभास अविविक्तम एकत्वेन अवभासमानम तत्पदवाच्यार्थो भवति. This becomes the vachyartha of tatpada. Sequentially, have you seen how your thought has distilled, got refined to come to this understanding? Yes, Swamiji. Yes, Swami. कठिन नहीं ना हो रहा है? बता दो भाई यहीं पे.
ना जी, बाद में ठीक है स्वामी समझेंगे, जी। ऐसे मत करना, समझ लो, अभी समझ लो। विविक्तम अखंड चैतन्यम तत्पद लक्षार्थो भवति। नाउ व्हाट इज द लक्षार्थ ऑफ तत्पद? अखंड चैतन्य। विविक्तम अखंड चैतन्यम, ठीक है। विवेकतम, यहां विवेक हो चुका है कि माया क्या है, मिथ्या पदार्थ है। इस माया से उपहित कंडीशनड चैतन्य जो लगता है वह भी अब मिथ्या पदार्थ है। तो क्या ये विवेक जहां हो गया कि चैतन्य में कोई माया नहीं, तो माया से चैतन्य उपहित भी नहीं, केवल चैतन्य है। विविक्तम अखंडम चैतन्यम तत्पद लक्षार्थो भवति। ये तत्पद का लक्षार्थ है, ठीक। यस जी स्वामी। स्वामी जी। ये जो लक्षार्थ है वही स्वरूप लक्षण से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चल के वो बताएंगे कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये पदार्थ तत्पदार्थ का शोधन कैसे है और त्वम पदार्थ का शोधन कैसे है, ठीक। वो विषय हम देखेंगे। यहाँ पे कमेंट्री सेक्शन में देखो, थर्ड पैराग्राफ। एतौ अन्वय व्यतिरेकौ तत्पदार्थ शोधन उपाय। ये अन्वय व्यतिरेक क्या है? तत्पदार्थ के शोधन का उपाय है, ठीक है। अब अन्वय व्यतिरेक कैसे काम करते हैं वो बता देंगे। और वैसे ही अन्वय व्यतिरेक त्वम पदार्थ में भी काम करेगा। अन्वय व्यतिरेक क्या है? एक तरीका है, इट इज एक शैली है, एक तरीका है। दिस इज अ वे इन विच समथिंग इज कॉग्नाइज्ड, ओके। So how is this cognition taking place is being told to us here. एतौ मतलब these two, which these two? अन्वय व्यतिरेकौ तत्पदार्थ शोधन उपायो। क्या है ये अन्वय व्यतिरेक? उपाय है। उपाय means it is a मेथड। method. Method for what? तत्पदार्थ To शोधन। understand the तत्पदार्थ padartha. शोधन। अन्वय व्यतिरेकौ तत्पदार्थ शोधन उपायो, ठीक है। हम देखेंगे इसको आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। थैंक यू ऑल। Thank you, Swami.